This is Go-MMT Radio. Go-MMT Radio. Let's go. Powered by Make My Trip, Go IBBO and Redbus. Millennial Masti on Go-MMT Radio. आप सुन रहे हैं GO-MMT रेडियो में हूँ आरजे रूबी एंड टुडे इज अ वेरी वेरी एक्साइटिंग शो एन एक्सट्रीमली नॉस्टैल्जिक शो एंड समथिंग दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट बिकॉज आज है मिलेनियल मस्ती एंड व्हेन यू टॉक अबाउट मिलेनियल्स देयर इज सो मेनी थिंग्स दैट अ 90s kid can relate to, right? And that's what we're going to talk about on the show today. चाहे वो कैसेट्स हो या फिर टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर देना हो, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना या फिर टेप को फिक्स करना या फिर लैंडलाइन हो या फिर those cameras and Kodak के जो रील्स या फिर माधुरी दीक्षित के कपड़े या हम आपके हैं कौन का वो टफी बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें होंगी आज ऑन द शो. बट बाय द वे मुझे एक बात बताइए, व्हेन आई से 90s, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड? थिंक अबाउट इट, वी विल ट्राई टू टॉक अबाउट इट इन अ बिट. लेकिन बिफोर आई गेट ऑन टू द फर्स्ट सॉन्ग फ्रॉम द 90s, आई हैव अ न्यूज फॉर यू एंड दिस इज स्पेशली फॉर ऑल द म्यूजिक लवर्स. हियर्स अ स्पेशल ट्रीट. अगर आप बाथरूम सिंगर हो या फिर प्रोफेशनल सिंगर हो या फिर ओकेशनल सिंगर हो ना, तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि हम आपके लिए लेके आए हैं Go-MMT Karaoke Evening Valley of Voice. जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ आपके लिए है. बट आपको करना क्या है? अगर आप सिंगर हैं तो आपको हमें कांटेक्ट करना है. यू गॉट टू रीच आउट टू अस एट headsetgo@go-mmt.com. और याद रखिएगा, ये आज हो रहा है, आज शाम को कैफेटेरिया में, गुड़गांव के कैफेटेरिया में, between 4 to 6 p.m. So before we move on, let's celebrate Rahul Chaurasia's birthday. Rahul is senior software engineer from the technology department, Gurgaon. Rahul, this birthday message comes to you from Anshul Parmar, senior principal software engineer, technology department, Gurgaon. Hello Rahul. Here's wishing you a very happy birthday from the whole holidays team. You bring a lot of energy into the team. Keep up the good work and wishing you an excited year ahead with us. Hope you have a great day. Happy birthday once again. Rahul, once again wishing you a very, very happy birthday. Many, many happy returns of the day. Hope you have a wonderful day, a wonderful, wonderful year ahead. And yes, you can definitely go and thank Anshul for wishing you specially on Go-MMT Radio. Happy birthday! By the way, if you also want to wish your friends, your colleague at work, you'll have to send us an email. Write to us at headsetgo@go-mmt.com. But remember, it has to be 48 hours prior. से थोड़ी देर पहले पूछा था, कैसी कौन सी चीज़ है? What's the first thing that comes to your mind when I say 90s? And you know what's the first thing that comes to my mind is cassettes. Cassettes and tape fixing. यार, I was a music lover. तो मेरे घर में, एटलीस्ट मेरे रूम में, आई हैड दिस एंडलेस कलेक्शन ऑफ कैसेट्स और फिर वॉकमैन, स्पेशली ड्यूरिंग कॉलेज डेज, सॉरी स्कूल डेज, वॉकमैन. एंड आई रिमेंबर कि मेरे भाई हैड वाज ट्रैवलिंग अब्रॉड, तो बहुत मना के, बहुत पटा के ही ब्रॉट दिस वॉकमैन फॉर मी एंड दैट वाज समथिंग दैट आई वुड टेक अलॉन्ग विथ मी वेयर एवर आई गो. स्पेशली अगर आप उस स्कूल पिकनिक्स और ट्रिप्स के लिए जाते थे एंड इफ यू हैड अ वॉकमैन विथ यू, यू आर लाइक द कूलेस्ट किड इन टाउन, तो वॉकमैन और वो कैसेट्स. एंड यार, like another great memory that I have with cassettes is एक टेप रिकॉर्डर हुआ करता था, राइट? ऑब्वियसली बिग स्मॉल जो भी टेप रिकॉर्डर. एंड उसमें क्या करते थे हम लोग, गलती से रिकॉर्ड बटन अगर ऑन हो गया तो गाने के बीच में यूल हेयर somebody screaming, somebody crying, somebody shouting and then you'll fight. किसने मेरा कैसेट खराब कर दिया, क्यों किया, ऐसा क्यों, वैसा क्यों? एंड कभी कभार कैसेट सुन के जब वो घिस जाता है तो फिर हम सब मैकेनिक बन जाते हैं, लाइक ओपनिंग द टेप रिकॉर्डर और उसे फिक्स करना पेंसिल से या पेन से. I think that was like those are such great memories यार, सच में. एंड पता है मेरे केस में क्या था, मेरा जो एक कज़न है ना, he loved music too, और he would buy all these new cassettes and I would try to pataw him and bribe him just so that he could give me those new cassettes. And वही गाने सुन के like by heart करना, रट्टा मारना was all that we did all day.
एंड आई ऑल्सो रिमेंबर जब कैसेट्स की बात हो रही है तो जब कहो ना प्यार है रिलीज्ड, ऋतिक रोशन बिकेम सच अ सेंसेशन और ईच एंड एवरी कैसेट हैड अ डिफरेंट पोस्टर ऑफ ऋतिक रोशन एंड ऑब्वियसली दैट वाज देयर स्ट्रैटेजी. गर्ल्स वेंट क्रेजी एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स राइट दे हैड like 4 to 5 of those cassettes just because they wanted different pictures of ऋतिक रोशन ताकि वो तकिए के नीचे रख कर आराम से सो सकते थे. So I think cassettes और tape recorder is thoda personal yaar, has so many memories. Chalo, let's get on to a song. But when I'm talking about cassettes and when I'm talking about the tape recorder and getting something recorded on those cassettes, I'm sure you all have great memories. Share it with me. Write to me headsetgo@go-mmt.com. Chalo, enjoy the next song. Stay tuned. This is Go-MMT Radio. मैं हूँ RJ Ruby. सूरज वोहरा. तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं. ऐसा हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं. जाने मन हम भी तुम पे जान सार करते हैं, जाने मन हम भी तुम पे जान सार करते हैं. ऐसा हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं. खुशियों भरी दिवाली विद Go-MMT Radio family. Go-Trippers इस दिवाली जीतो daily exclusive gift hampers, vouchers, special offers and more only on Go-MMT Radio. हर दिन Go-MMT Radio पर होंगे कई contests. बस जवाब देते जाओ और गिफ्ट जीतते जाओ. Stay tuned. Millennial Masti on Go-MMT Radio. आप सुन रहे हैं Go-MMT रेडियो. मैं हूँ RJ रूबी एंड आज का शो इज ट्रूली नॉस्टैल्जिक राइट, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट 90s बिकॉज आज है मिलेनियल मस्ती. थोड़ी देर पहले आई वाज टेलिंग यू अबाउट कैसेट्स एंड ऑब्वियसली दीज आर द थिंग्स दैट ब्रिंग अ बिग स्माइल ऑन माय फेस, क्योंकि ये पुरानी यादें हैं यार जिनके साथ वी हैव ग्रोन अप टू राइट, एंड ये ऐसी यादें हैं दैट विल ऑलवेज ब्रिंग अ स्माइल ऑन आवर फेस राइट. ट्रूली नॉस्टैल्जिक. चलो 90s की जब हम बात कर रहे हैं तो द नेक्स्ट थिंग दैट comes to my mind is landlines. Remember gossiping with your best friend, those big fat ugly landline phone numbers for hours together. And कभी कभार मेरी माँ पूछती थी यार कितना बात करेगी, स्कूल से आई है इतनी सारी बातें तो स्कूल में करके आई है, अभी फिर से फोन पे बैठ गई. And it was just not the landlines. Landlines also had an evolution, right? कुछ दिनों के बाद there were landlines that came with caller ID and that was the biggest scare, क्योंकि अगर if you had one चोरी का call everybody would get to know, and my parents or my relatives they had this habit of going back and checking कि किसने किसको call किया, किस number से call आया. So if you were talking to your boyfriend or girlfriend at that time, you had to be very careful. You had to immediately go and delete that number from the caller ID. And I think जब landlines की बात हो रही है तो the other thing that comes to my mind is extension. Now for those who are these new kids जिनको समझ नहीं आ रहा है कि extension phone क्या है, it's just the same phone in other rooms. Like your mother's room would have one phone. If your first floor would have another phone. And if you are having a conversation with your boyfriend or girlfriend or some confidential बातें हो रही है, you never know who's going to pick up the extension क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा, and you'll be happily talking and somebody else is listening. So the best tip was to patao your cousins or these younger people in the family and then make them do पहरेदारी, like guard near that extension phone, and just to give you some kind of इशारा अगर कोई भी extension phone के आसपास हो तो,
Like you immediately have to tell them hello या कुछ भी, like scream out the name or shout out the name just so that they know कि extension phone के पास कोई है, मतलब खतरा है. Be very careful. एंड जब लैंडलाइंस की बात हो रही है तो स्पेशली कोई फ़ोन करे तो इमीडिएटली चेंजिंग द वॉइस फ्रॉम अ बॉयज़ वॉइस टू अ गर्ल्स वॉइस. एंड यार बहुत सारी यादें एंड डोंट थिंक दीज आर ऑल थिंग्स डन बाय मी. इट्स डन बाय ऑलमोस्ट एवरी मिलेनियल किड एंड everyone has some memories or the other when it comes to landlines. Yeah, when we're talking about the 90s, what's the next thing that comes to my mind is the camera. Yeah, आजकल we all have these smart fancy phone cameras, right? जहाँ पे भी जाओ you can capture anything. लेकिन एक ज़माना ऐसा था जहाँ पे यशिका का रील कैमरा हुआ करता था, यशिका कोडैक, and you had to be very careful when you use it. और सिर्फ ये था कि you had to change those reels. याद है आपको? There were I think 36 or 32 that would come in one reel, so you got to be very careful. You had to be very careful. You get limited number of pictures, and you can't take 1,000 pictures to get one picture right. You would not even get to see them. So you click these pictures and then you go to these studios, give it to them, and फिर वो आपको wash करके print करके negatives के साथ देते हो. And some of them when it comes to you, you're like, wow, I look so good, and sometimes you're like, काश मैं कैमरा की तरफ देखती, काश मैं ऐसा करती, काश मैं वैसा करती. लाइक गॉन आर द डेज जहाँ पे यू वुड डू समथिंग लाइक दिस, राइट? यस, ऑब्वियसली आजकल बहुत कन्वीनियंट हो गया. आजकल आप कहीं पे भी पिक्चर्स ले सकते हो. एंड आई नो कि मोस्ट ऑफ देम पिक देयर फोन मेनली डिपेंडिंग ऑन द कैमरा. अगर कैमरा अच्छा है तो फोन अच्छा है, रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इट इज़ एंड व्हाट नॉट इट. बट यार कैमराज, लाइक आई रिमेंबर हम लोग स्कूल के पिकनिक में सब जाते थे. सो दिस कैमरा वाज अ लग्जरी थिंग. और वो फोटो जो कोडैक के जो रील्स होते थे, दे वर प्रीटी एक्सपेंसिव. एंड आप कहीं पे भी घूमने फिरने जाओ तो यू विल फाइंड पीपल सेलिंग दीज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैशन. आई स्टिल रिमेंबर हम आपके हैं कौन, आफ्टर दिस मूवी वाज डन, राइट, एवरी गर्ल वांटेड सिमिलर क्लोथ्स. लाइक माधुरी के कपड़े बिकेम सच अ बिग ट्रेंड, स्पेशली शादी के टाइम पे. And tailors went crazy. Every girl wanted the same lehenga. Every girl wanted the same sari. Everyone wanted the same work. And all those zardozi and those, हाथ का काम करने वाले कढ़ाई बुनाई जो भी कहते हैं, those guys went crazy क्योंकि हर किसी को माधुरी का ब्लाउज, माधुरी की साड़ी, माधुरी का लहंगा यही चाहिए था. इनफैक्ट मेरे फैमिली में भी वो क्रेज था क्योंकि मेरी दीदी की शादी उसी वक्त हो रही थी. एंड शी ऑल्सो वॉन्टेड सिमिलर वर्क एंड so it was a huge craze. But it's not only about Madhuri and हम आपके हैं कौन. When you talk about craze, I think कुछ होता है. Especially Kajol's dungareens, it became such a big trend. Obviously that was not how it was projected, but it is still so cool. In fact, aaj bhi it's still in style. Aaj bhi people I still find it very very cute. But I still consider it. Whenever I see that now, मुझे काजोल की याद आती है and the movie कुछ होता है. But आप सुन रहे हैं Go-MMT Radio. मैं हूँ RJ Ruby and आज है Millennial Masti. And you know what? I really had a very very good time today on the show क्योंकि बहुत सारी बातें आज हमने की and it was super nostalgic. चाहे वो लैंडलाइंस की बात हो या फिर कैसेट्स या फिर 90s fashion. I think everything brings a big smile on my face, and I'm sure it brought a big smile on your face as well. तो मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि when you talk about 90s, what's the first thing that comes to your mind? You could write to me headsetgo@go-mmt.com. अच्छा, चलते here is a very important announcement for all music lovers. अगर आप बाथरूम सिंगर हैं या फिर प्रोफेशनल सिंगर हैं या फिर ओकेशनल सिंगर हैं, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है. We have a special treat for you क्योंकि हम लेके आए हैं आपके लिए Go-MMT Karaoke Evening Valley of Voice. बस आपको इतना ही करना है. You got to reach out to us headsetgo@go-mmt.com. And याद रखिएगा कि ये आज शाम को हो रहा है between 4 to 6 at Cafeteria Gurgaon. So see you there. Have a good time and keep smiling. Hello, Go-Trippers! This is Ranveer Singh and you are listening to Go-MMT Radio. Head, set, go!
To listen to your favorite Go-MMT radio from anywhere, follow us on YouTube, Facebook, LinkedIn and Instagram. Visit the Go-MMT radio page for daily updates and enjoy listening to your favorite radio channel.